Hello everyone, welcome to the history class. I am Prativarani Barik, junior lecturer in history, Ravensa Junior College. Today I am going to discuss about the ancient Greece civilization. Now we are going to discuss about how the Greeks established a civilization which contributed a lot to the human beings of different countries. What are the scientific inventions, how they have contributed a lot in the field of art and architecture, what are their contribution in the field of politics. Especially we will discuss about the age of pericles. तो आजिर क्लास रे आमे आलोचना करिबा ग्रीस इतिहास विषय रे पुरातन ग्रीस सभ्यता किपरि प्रतिष्ठा होइथिला, किपरि भावरे ग्रीस सारा विश्व को तार अवदान देछि राजनीतिक क्षेत्र रे, कला साहित्य विज्ञान प्रत्येक क्षेत्र रे तार अवदान रहिछि। बा ग्रीस साहित्य कृति ड्रामा ए सबु मध्य प्रथमे सेठारे सृष्टि होइथिला, जहा कि सारा विश्व पई एहा एक अवदान। इतिहासर जनक हेरोडोटस, he also belongs to the Greece civilization. Aristotle, he also belonged to the Greece civilization, and the age of Pericles is known as the golden age of Greece history. आमर जमती भारतर गुप्त जुग को सुवर्ण जुग कहा जाए, सेमिति पेरिकल्स को जुग को ग्रीस इतिहास रे सुवर्ण जुग कहा जाए, कारण से ही समय रे से प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रतिष्ठा करिथिले, शासन क्षेत्र रे एक वैप्लविक परिवर्तन आनिथिले, लोक माननकु अधिकार देइथिले एवं से अधिकार रु सेमानक भितरे लोक मान भितरे कर्तव्य बोध जागृत होइथिला। So he was the first who introduced direct democracy in Greece, and during the age of Pericles, the people they lived very happily, and they developed their responsibility sincerely or automatically. There was the development of responsibility among the people, because he had given the rights to the people. Then during his period, due to the better social system and better political system, the people they concentrated on the development of their culture, the development of their art, architecture, literature, science. Then they worked for the all round development of their society, their polity, their economy. So that was the period of golden age. ग्रीस इतिहासर सुवर्ण जुग हेउछि पेरिकल्स का जुग। तो आजिर क्लास रे आमे आलोचना करिबा एंशिएंट ग्रीस और एज ऑफ पेरिकल्स। So in the first slide you can see the map of ancient Greece. You can locate Athens and Sparta. Athens and Sparta were two important or very powerful city states of Greece. ग्रीस रे जो नगर राज्य सब प्रतिष्ठा करा गला, से नगर राज्य मध्य रे जते सब नगर राज्य प्रतिष्ठा करा जाइथिला, सबुठारु शक्तिशाली एवं क्षमताशाली थिले एथेन्स एवं स्पार्टा। एथेन रे गणतांत्रिक शासन पई सारा विश्व रे एहा विख्यात हो जाइथिला। स्पार्टा रे शारीरिक शिक्षा उपरे गुरुत्व दे जाउथिला, मिलिटरी एजुकेशन उपरे गुरुत्व दे जाउथिला, and they gave importance to the physical education, to the development of their society. They wanted to create a society which was concentrating on the military training. So here in this map you can see the location of Athens and Sparta. The ancient culture of Greece had enriched the world civilization. सारा विश्व को ग्रीस तार सभ्यता संस्कृति द्वारा प्रभावित करिछि। प्रत्येक क्षेत्र रे ग्रीस रो अवदान रहिछि। इवन इतिहास रचना क्षेत्र रे हेउ, विज्ञान क्षेत्र रे हेउ, राजनीति विज्ञान क्षेत्र रे हेउ, साइंस मैथमेटिक्स प्रत्येक क्षेत्र रे
एहार अवदान अतुलनीय. Then Greece civilization, we will discuss about the Greece civilization. First of all, discuss about the geography of Greece. The geography of Greece had helped immensely to create a bright history of this land. So, Greece is surrounded by the great Balkan mountain ranges in the north, Mediterranean Sea in the south, Aegean Sea in the east and Adriatic Sea in the west. So, this geographical situation separated Greece from the outside world. Greece was separated from other countries naturally. तो प्राकृतिक भावरे ग्रीस को प्रकृति सुरक्षा प्रदान करिथिला. ग्रीस स्वतंत्र भावरे निजर परिचय सृष्टि करिथिला. ग्रीस रो प्रत्येक नगर राज्य से माने भिन्न भिन्न परंपरा भिन्न भिन्न प्रथा सबू देयर वाज नो यूनिटी अमंग द ग्रीस सिटी स्टेट्स. ग्रीस रे जते सब सिटी स्टेट थिले समस्तक मध्य रे समानता नथिला बिकॉज देयर वाज द differences in among the city states, and they were the whole Greece peninsula it was surrounded by Balkan mountain ranges, then Mediterranean Sea. तो उत्तर रे से बल्कान पर्वतमाला द्वारा परिवेष्टित होइथिला. देन दक्षिण रे भूमध्य सागर एजियन सी पूर्व रे रहिथिला, एड्रियाटिक सी पश्चिम रे रहिथिला. तो चारिपटरू यह को प्रकृति सुरक्षा प्रदान करिथिला. एवं जेहेतु यह माउंटेनस रीजन थिला, आज इट वाज द माउंटेनस रीजन, सो द पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे लेबर हार्ड इन ऑर्डर टू maintain themselves to develop their economy, as that was the hilly region. So, every city state they had their own culture, they had their own religious system, their own political system, they had narrow regionalism, they had developed तांकर आंचलिकवाद तांकर मध्य बहुत रहिथिला. से माने निज निज अंचल शासक मानू से माने अधिक गुरुत्व देउथिले. So, there was no unity and there was not one nation system in Greece civilization, as it was divided into several city states. जेहेतु ग्रीस विभिन्न नगर राज्य रे विभक्त होइथिला, सेमान मध्य एकता नथिला, तो सेठारे एक स्वतंत्र सरकार बा एक सबु ग्रीक स्टेट नगर राज्य माने नै जो सरकार ता केबे संभव होई पनला. जद्य समते फेडरेशन बहु समय करा जाइछि किंतु ताहा क्षणस्थायी होई रहिथिला. The geography, the climate, vegetation and long coastline attracted the external nomadic races to this land from 2000 BC to 1500 BC. So, many Aryan tribes they entered into Greece and established their settlements. The intermingling of the cultural elements of different Aryan tribes contributed to the development of ancient Greek civilization. So, these Aryan tribes were Hellenes, Thessalians, Brocians, Archaeans, Phocians and Dorians. Later on, after the synthesis of their cultures and political integrations, the Greeks in general were called Hellenes. तो ग्रीक सभ्यता को विभिन्न सभ्यता नाम नामकरण जमती हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन, हेलेनिक सिविलाइजेशन, मिसियन सिविलाइजेशन, होमेरिक सिविलाइजेशन. So, there are so many civilizations named given the name to the Greece civilization. एहार भौगोलिक अवस्थिति, तार जलवायु, तार वेजिटेशन ए सब को आधार करी जेतेबेले जनसंख्या बा लोक मानकर बसति स्थापन लोक माने करिवे आरंभ कले. आर्य माने जेतेबेले आसीकी सेठारे बसति स्थापन कले, तार जनसंख्या रो वृद्धि हैला. ख्रीष्टपूर्व 2000 रु ख्रीष्टपूर्व 1500 मध्य रे आर्य माने ग्रीस रे प्रवेश कले. सो बहु आर्य जाति आसीथिले जेमिति कि मु वर्तमान कहिली जेमिति हेलेनिस माने, थेसेलियंस माने, ब्रोसियंस माने, आर्कियंस, डोरियंस ए माने आसी ग्रीस रे बसति स्थापन कले एवं ग्रीस रे तांकर सभ्यता आरंभ करिथिले. बट दे एस्टाब्लिश देयर ओन सिविलाइजेशन. द आर्यंस दे एस्टाब्लिश देयर ओन सिविलाइजेशंस. परवर्ती समय रे सेमानकर सभ्यता तांकर संस्कृति सबु सम्मिश्रण घटे हेलेनिक बा हेलेन सभ्यता प्रतिष्ठा होइथिला. So, prior to the arrival of the Aryan tribes in Greece, there was an ancient civilization in an island called Crete.
situated in the Aegean Sea. As this civilization had its origin in the island of Crete, it was called Cretan civilization. जेहेतु क्रेट एक वाणिज्य समृद्ध सहर थिला, एहा अन्य सबु देश मानक सहित विभिन्न राष्ट्र मानक सहित वाणिज्य संपर्क स्थापन करिथिला क्रेट. So that was in that area there was a civilization developed in Greece which was known as Cretan civilization. Then it spread over to the whole of Aegean region and came to be called as Aegean civilization. परवर्ती समय से ही सभ्यता बा से क्रेटियन सभ्यता विस्तृति लाभ करिथिला संपूर्ण एजियन अंचल रे एवं ताहाको कुहागला एजियन civilization. So as the civilization had its political, cultural nerve center at a place called Messina. So in the Greece peninsula it was called Messenian civilization. It was the Messenian civilization which provided the necessary base for the development of ancient Greece civilization or Hellenic culture and civilization. The root of European culture and civilization lies in the classical Greek civilization. तले यूरोप रो संस्कृति, यूरोप रो सभ्यता सबु किछि क्लासिकल ग्रीक सभ्यता ऊपर पर्यवेसित होइला. तार मूल तार बेस कहिले हेलेनिक सिविलाइजेशन बा ग्रीक सिविलाइजेशन, क्लासिकल ग्रीक सिविलाइजेशन को बुझाइते. कारण विश्वर प्रत्येक राष्ट्र ग्रीक सभ्यता द्वारा प्रभावित होइछन्ति. ग्रीक सभ्यतार अवदान बहुत किछि रहिछि अन्य सब राष्ट्र मानक पई. तले ग्रीक सभ्यता को विभिन्न नामकरण करा जाइछि जेमति कि हेलेनिक सिविलाइजेशन, मेसेनियन सिविलाइजेशन, क्रेटियन सिविलाइजेशन. विभिन्न समय रे जते बेले विभिन्न अंचल सभ्यता सब सृष्टि होइछि से सब को नामकरण करा जाइछि. तो 700 ख्रीष्टपूर्व पूर्वरु ग्रीस रो इतिहास विषय रे बेसी किछि जणा नथिला, किंतु होमवर्क द्वारा रचित इलियड ओडेसी ताहा से विषय सूचना बा ग्रीक इतिहास विषय सूचना देथिला बा ग्रीक इतिहास रो बहु किछि तथ्य आमे पाई थाउ जहा कि होमेरिक सिविलाइजेशन मध्य कुहा जाय. So nothing is known in greater detail about the Greeks period to 700 BC. From two epics of Homer, Iliad and Odyssey, the historians have tried to reconstruct the social, the political and religious history of the early Greeks. For this, the early period of the Greek history is otherwise called the age of Homer. जहाँ को हमें कहो होमर का जुग, कारण होमर का द्वारा रचित साहित्य कृति इलियड एवं ओडिसी ए दुई साहित्य कृति रु आमे ग्रीक सभ्यतार बा ग्रीक मानकर सामाजिक जीवन, अर्थनैतिक जीवन, तांकर धार्मिक जीवन, तांकर संस्कृति प्रत्येक विषय आमे जानि पारि थाउ. So Iliad and Odyssey are two important books which provides us a lot of information regarding the past of Greece period to the 700 BC. ख्रीष्टपूर्व 700 पर्यंत समयर समस्त इतिहास हमको सेथरो मिली थाए. तेनो ताकू कहा जाए द एज ऑफ होमर, होमर का युग. एंड इनिशियली they were divided into a number of groups. There was one king for every group and the kings were aided by a council of elders. When the Aryans they came into India and they established their settlement in different regions of Greece, they divided in groups. जते बेले ग्रीक रे आर्य माने सब आसी प्रवेश कले, बसमान को बसति स्थापन कले, आर्य माने विभिन्न ग्रुप सब प्रतिष्ठा कले. से ग्रुप रे प्रति ग्रुप रे जणे लेखाय राजा रहिले. सो ईच ग्रुप हैड ए किंग. प्रत्येक ग्रुप रे जणे जणे राजा रहिले. There was one king for every group and the kings were aided by a council of elders. तो वयोज्येष्ठ व्यक्ति मानकु नहीं गोटे परिषद गठन करा गला जो माने कि राजा को शासन कार्य रे सहायता कले. सो विभिन्न ग्रुप सब थिला, से ग्रुप मानकु शासन कार्य रे सहायता करिबा पई काउंसिल्स ऑफ एल्डर्स प्रतिष्ठा करा गला. वयोज्येष्ठ व्यक्ति मानकर परिषद. दे एडवाइज द किंग how to implement his policies, how to administer the people and how to take the welfare measures for for the people. So initially being divided into groups or tribes, they were living in villages. Later on with the political integration of these villages, city states were developed.
ताहले पिला माने तुमने वर्तमान जानिलो किपरि भाबरे नगर राज्य प्रतिष्ठा हैला। प्रथमे आर्य माने आसिले बसति स्थापन कले विभिन्न ग्रुप रे विभक्त हेले विभिन्न ग्रुप रो जने जने राजा रहिले से राजा को शासन कार्य सहायता करने पई काउंसिल्स ऑफ एल्डर्स रहिले बा वयोज्येष्ठ व्यक्ति परिषद रहिला जहा फल कि ताहा थिला ग्राम्य भित्तिक बा ग्राम जेमति ग्राम रे सब शासन कर दैट वाज विलेज टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किंतु परवर्ती समय रे ताहा सिटी स्टेट रो रूप नेता दैट वाज transformed into the city states. So there are so many city states established in different parts of Greece civilization. Greece सभ्यता रे बहुत गुड़िए नगर राज्य सब प्रतिष्ठा हो करागला ता परवर्ती समय रे. Then councils and assemblies were organized. The council was consisting of aristocratic classes of people called as eupatrids. जेतेबेले धनी व्यक्ति माने संभ्रांत व्यक्ति माने से मानकर परिषद रहिला they formed the aristocratic group से माने कुहागला eupatrids. They were the most respectable people in the society. समाज रे से माने थिले मान्यगण्य व्यक्ति. They were revered by everyone. They were respected in the society. So those people they were known as eupatrids. Then the assembly was a body of the common people. तापर assembly मध्य राजा को शासन कार्य सहायता कला तो assembly that was a body of common साधारण जनता मान को नहीं assembly गठन करा गला. Each city state was having its own administrative organization. तो प्रत्येक नगर राज्यर निजर गोटे प्रशासनिक विभाग प्रशासनिक संगठन रहा administrative organization. Each city state had administrative organization of their own. There was no link between any city state with other city state. Then we'll discuss about the rise of city states. किपरि भाबरे नगर राज्य गुड़िकर राइज है से समय उत्तरे एंशिएंट पीरियड रे. डिफरेंट ट्राइब्स आर चूजन different regions for establishing their city states. These city states were separated from each other by range of hills. Each city state was developed around one mountain. So there was no unity among these city states. जेतबे नगर राज्य सब प्रतिष्ठा करा गला से माने विभिन्न अंचल रे तांकर सीमा रेखा प्रति पर्वतमाला बा माउंटेन गुडी को तांकर सीमा रहिला से माने प्रत्येक नगर राज्य गोटे गोटे माउंटेन सब रहला माउंटेनस रीजन सब रहउथिला. सो डिफरेंट ट्राइब्स आर चूजन डिफरेंट रीजन्स से माने निजे निजे तांकर निजे अंचल सब निजे चूज कले बा निजे चयन करी सेठारे तांकर नगर राज्य सब प्रतिष्ठा कले. दिस सिटी स्टेट्स वे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय रेंज ऑफ हिल्स. So each city state was developed around one mountain. There was no unity among these city states. There was no uniformity in customs and traditions, language, laws and regulations and administrative system among them. The citizens of Greece suffered from narrow provincialism. जेते सबु नगर राज्य थिला समस्ते निज निज अंचलर प्रथा परंपरा को से माने पालन करुथिले निज राजा को सम्मान दौथिले. They were responsible in their own province, in their own region. सेमानक भीतर जो जाति प्रेम थिला बा देश प्रेम थिला निज देश प्रति थिला अन्य देश प्रति नथिला एवं सेमाने निज देश पई जीवन देबक मध्ये पछो नथिले. They never they showed their सेमान तांकर true nationalism. They showed their true nationalism for their own country. So that there was the development of narrow provincialism. सेमानक भितरे प्रादेशिक भावना सब आसिला आंचलिकतावाद आमे जाहको निज अंचल केवल से माने भल पाबे निज अंचल उन्नति. देयर वाज नो फीलिंग फॉर द ग्रीस बट ओनली they had not developed their patriotism, their nationalism for the Greece but only for their city state. बा निज नगर राज्य प्रति सेमानकर देश प्रेम भावना रहिला. They were constantly engaged in conflict with each other for expansion of the respective territories. निज निज अंचल सीमा वृद्धि करिया पे सेमाने सबु बेले कलह बा द्वंद्व रे लिप्त रहउथिले तांको भितर सब बेले कलह लागुथिला.
they were always trying to extend their own territory. निज अंचल निज राज्य किपर से सीमा वृद्धि करेंगे से सब से चेष्टा करुले. they were always trying to spread their own territory. Then still then there was some kind of unity among themselves, among the Greek city states as far as the religion and athletics were concerned. Regularly religious convocations called as amphictyonies were held, which were being attended by the representatives from all the city states. In these religious congregations, decisions were taken for the maintenance of the temples and celebration of annual festivals. सेमानक भितरे जदियो बहुत भिन्नता रही विभिन्न अंचल से विभिन्न प्रकार प्रथा परंपरा पालन करुले, विभिन्न धर्म विश्वास से भितर रही तथापि तांको भितरे एकतार सूत्र बा एकता जे सृष्टि करथिला ताहा थिला धर्म एवं क्रीड़ा. से माने ईश्वरंको उपासना को गुरुत्व देउथिला. दे डेवलप द रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड इन देमसेल्व्स. तांको भितरे धार्मिक भावना रही तो से माने रिलीजियस कांग्रेगेशन जहाँ धार्मिक सम्मेलन सब होता से सब कांग्रेगेशन से जोग देउथिले. दे अटेंडेड सेवरल रिलीजियस सेरेमनीज बा धार्मिक सम्मेलन को मध्य से माने जोग देउथिले. सो धार्मिक सम्मेलन जोग देउथिले. देयर वाज द रिलीजियस कांग्रेगेशंस. डिसीजंस वर टेकन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल्स. किपरि भाबरे मंदिर गुड़िकर जत्न निया जिवो, किपरि भाबरे विभिन्न वार्षिक पर्वपर्वाणी सब पालन कर एनुअल फेस्टिवल्स किपरि पालन करा जिवो से सब ऊपर मध्य गुरुत्व दिया जाउथिला. In every 4 years an athletic competition was held in a place called Olympia, for which the competition was called Olympic Games. ओलंपिया नामक स्थान रे प्रति 4 वर्ष रे थरे क्रीड़ा प्रतियोगिता हेउथिला. एथलेटिक competition was held in a place called Olympia, for which the competition was called as Olympic Games, and athletes from all the city states were participating in it. In spite of the existence of such national sentiments, the ancient Greeks could not establish a nation state. At times there were federation of states, but these were of very temporary nature. जेते सब भिन्नता थिला बा विभिन्न नगर राज्य रही मध्य ग्रीस रे सेमानक भितरे एकता प्रतिष्ठा करिथिला क्रीड़ा एवं धार्मिक भावना बा रिलीजियस टेम्परामेंट हेल्प द पीपल ऑफ ग्रीस टू एस्टाब्लिश वन टाइप ऑफ नेशनलिज्म. सेमान भितरे जातीयता भाव रहिथिला एवं जदियो बहु समय सेमानक भितरे राज्य राष्ट्र मानकर फेडरेशन राष्ट्र संघ केतरे कोन प्रतिष्ठा होता, बट दैट वाज टेम्पररी इन नेचर. एंड द एंशिएंट ग्रीक्स दे पेड फोकस टू द फिजिकल एजुकेशन. से माने शारीरिक शिक्षा सामरिक शिक्षा उपरे मध्य गुरुत्व दिले. क्रीड़ा को से माने अग्राधिकार देइथिले ग्रीस अधिवासी माने, जहा फल रे कि से माने क्रीड़ा प्रतियोगिता मान करुथिले एवं ओलंपिक गेम्स हेउची विश्व को एक अवदान ग्रीक सभ्यतार. सो ग्रीस सिविलाइजेशन हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड आल्सो इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन बा शारीरिक शिक्षा शारीरिक प्रशिक्षण जहाँ सब दि जाऊला सुस्थ उत्तम स्वास्थ्यर अधिकारी होगापी से क्रीड़ा को गुरुत्व प्रदान करुले. With the emergence of city states of Athens and Sparta, two powerful city states in ancient Greece, there was the gradual evolution of democracy. Another notable event was the Greco-Persian War, which was fought in several phases that ultimately ended with the victory of Athens. As a result, Athens was elevated to the position of leadership over all other city states. ग्रीस रे बहुत गुड़े नगर राज्य रही किंतु एथेन्स एवं स्पार्टा यही दुई नगर राज्य शक्तिशाली नगर राज्य थिला. एथेन्स स्पार्टा दुईटी शक्तिशाली नगर राज्य थिला. एथेन्स एवं स्पार्टा यही नगर जिते उत्थान है जिते माने शक्तिशाली नगर राज्य रूपे आत्मप्रकाश कले से समय रे गणतंत्र अभ्युदय है. देयर वाज द इवोल्यूशन ऑफ
डेमोक्रेसी इन ग्रीस ग्रीस रे गणतंत्र शासन आरंभ कर एथेन्स रो भूमिका गुरुत्वपूर्ण थिला निर्वाचित प्रतिनिधि माने सरकार प्रतिष्ठा करथिले गणतंत्र थिला लोक मानक द्वारा शासन प्रतिष्ठा करथिला लोक मानक पई शासन होतला एवं लोक माने शासन करले सो that was the democratic form of government was first established in Athens in Greece. So Greece रो एथेन्स नगर राज्य रे प्रथमे गणतंत्र शासन प्रतिष्ठा करा गला ताले सारा विश्व को एथेन्स रो अवदान हैला गणतंत्र शासन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रीस पीपल और द एथेनियंस टू द वर्ल्ड सिविलाइजेशन विश्व समुदाय को एहा तांकर अवदान रहिथिला अनदर नोटेबल इवेंट वाज द ग्रीको पर्शियन वार बा ग्रीक पर्शिया मध्य युद्ध मध्य होइतिला विभिन्न पर्याय होइतिला इन डिफरेंट फेजेस इट बट लास्ट इन द लास्ट एथेन्स वाज विक्टोरियस एथेन्स एथरे विजय लाभ करिथिला एवं एथेन्स रो गुरुत्व सारा ग्रीस रे वृद्धि पाइथिला एथेन्स बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट ऑफ ग्रीस सिविलाइजेशन as it had won the own victory over the Greco-Persian Persian wars and it has also established its importance and its power its suzerainty over other city states of Greece Greece रो अन्य सब नगर राज्य उपरे मध्य एथेन्स निजर प्रभाव विस्तार करिथिला तापर एथेन्स रे गणतांत्रिक सरकार प्रतिष्ठा थिला विश्व रे एक विश्व पाई एक अवदान एट दिस फेवरेबल आवर एथेन्स वाज फॉर्चुनेट टू बी एंडोर्ड विथ लीडरशिप ऑफ पेरिकल्स तापरे आमे आलोचना करिबा एज ऑफ पेरिकल्स पेरिकल्स का जुग वर्तमान आमे आलोचना करि सले ग्रीक इतिहास विषय रे एंशिएंट ग्रीस ग्रीस रे किपरि नगर राज्य सृष्टि हैला ग्रीस रे किपरि गणतंत्र शासन बहु पूर्व रही एवं पेरिकल्स जुग प्रत्यक्ष गणतंत्र किपरि भाव प्रतिष्ठा हैला से सब विषय वर्तमान आम आलोचना करिबा फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट द एंशिएंट ग्रीस हाउ ग्रीस केम इनटू प्रोमिनेंस हाउ द नेशन स्टेट्स originated in Greece. So at this favorable hour Athens was fortunate to be endowed with leadership of Pericles. His leadership and inspiration brought outstanding achievements in Greek civilization and culture. Greek इतिहास रे बा ग्रीक सभ्यता संस्कृति रे पेरिकल्स कर अवदान उल्लेखयोग्य तांकर शासन समय को ग्रीक रो सुवर्ण युग बा ग्रीक इतिहास रो सुवर्ण युग बोली कहा जाइछि According to H. Davis, the age of Pericles is the most brilliant in the history of Greece and indeed in the history of the world because of its tremendous achievements in art, literature and most things that make up the higher life of man. तले समाजर प्रत्येक क्षेत्र रे कला साहित्य स्थापत्य भास्कर्य विज्ञान राजनीति अर्थनीति प्रत्येक क्षेत्र रे पेरिकल्स को जुगरे लोक माने तांकर उत्कर्षता प्रदर्शन करथिले प्रत्येक क्षेत्र रे कला स्थापत्य क्षेत्र रे तांकर उत्कर्षता रहिथिला सेमानकर कला स्थापत्यर निदर्शन ता प्रमाण करे सेमानकर एक्सीलेंस ऊपर तांकर दे हैड शोड देयर एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर and in the sculpture they had also showed their excellency in the field of different fields like science and literary activities etc. So age of Pericles is regarded as the golden age in Greek history. In substance and volume of achievement it was as remarkable as the Augustan age in Rome. रोम रे अगस्ट सीजन कर शासन समय रे जेपरि लोक कृतित्व हासिल करा जाइथिला सेहि परि भाबरे ग्रीक इतिहास रे मध्य
प्रत्येक क्षेत्र में साफल्य अर्जन करा जायतिला एलिजाबेथान एज इन इंग्लैंड गुप्त एज इन इंडिया एंड मेजी एज इन जापान जापान रे मेजी सरकार भारत रे अतीतर गुप्त जुगर शासन देन इंग्लैंड रे एलिजाबेथ का शासन समय यही समय को सुवर्ण जुग कहा जाए कारण यही समय रे सामाजिक व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था एवं कला स्थापत्य साहित्य प्रत्येक क्षेत्र रे उन्नति परिलक्षित होता है प्रत्येक क्षेत्र रे लोक माने निजर उत्कृष्ट श्रेष्ठता प्रतिपादन करि थांती से समय रे कला साहित्यर विकास होता है ता सहित लोक माने मध्य शांति रे जीवन यापन एक सुस्थ समाज गठन करि थांती से समय को सुवर्ण युग कहा जाता है देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर आर्ट साइंस लिटरेचर and also a better social system established by the government. Then economic condition was also very good during that period. So that period is known as the golden age. ताको सुवर्ण युग कुहा जायथला जहा कि विभिन्न राष्ट्र मानकरे भिन्न भिन्न समय रे दर्शा जायछि जेपरि कि भारत रो होछि गुप्त शासन समय इंग्लैंड रे एलिजाबेथन शासन समय जापान रे मेजी सरकार का शासन समय रोम रे अगस्टिजन का शासन समय एवं ग्रीक रे पेरिकल्स का युग जहाँ कि सुवर्ण युग कहा जाए सो ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी एंड अचीवमेंट्स इन आर्ट लिटरेचर फिलोसॉफी पॉलिटिक्स मार्क दिस एज द एज इज ए लैंडमार्क इन ह्यूमन हिस्ट्री एज ए होल ताहा मानव सभ्यता रे एक छाप छाड़ी जाते दैट्स ए it's a landmark in human history of the world. Around 465 BC, Pericles became the administrative head of Athens. ख्रीष्टपूर्व 465 बेलू पेरिकल्स एथेन्स रो शासन मुख्य भाव में दायित्व ग्रहण करते he was a descendant of Cleisthenes and his father's name was Xanthippus who was one of the generals of Athenian army and his mother's name was Agarist. He was born in the year 491 BC and he married Aspasia who had also aristocratic lineages. So he was made the chief administrator of Athens at the age of 30 in 461 BC. ख्रीष्टपूर्व 461 रे से एथेन्स रो प्रशासक बा मुख्य प्रशासक भाव में दायित्व ग्रहण करथिले ही वाज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड ही ब्रॉट सेवरल रिफॉर्म्स इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स एंड एस्टैब्लिश्ड अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन दैट और इन ग्रीक सो हिज डेजिग्नेशन वाज स्ट्रैटेगस से थिले स्ट्रैटेगस हिज डेजिग्नेशन वाज that he was a strategist and he was elected continuously for 30 years in a democratical manner. But the गणतांत्रिक बा गणतंत्र सरकार बा लोक मानक द्वारा से 30 वर्ष धरि निर्वाचित होइथिले. He was very popular among the common people. साधारण लोकों भितरे से बहुत जनप्रिय थिले and he always cared for the कॉमन पीपल सब बेले से लोक मानकर उन्नति पई चेष्टा करुथिले जो माने सब समाज रा निम्न वर्ग थिले से मानकर किपरि उत्थान होई परिबो सेथि पई मध्ये से चेष्टा करुथिले. इन 429 BC पेरिकल्स डाइड. ख्रीष्टपूर्व 429 रे पेरिकल्स मृत्युवरण करथिले. सो ड्यूरिंग हिज लॉन्ग पीरियड ऑफ हिज रूल as a strategist, Pericles contributed significantly for the introduction of direct democracy and enrichment of the culture and civilization of Greece. तांकर से जो शासन समय रे से स्ट्रैटेजिस्ट से शासन समय रे से ग्रीस रो सर्वांगीन उन्नति करिथिले. He tried his level best for the upliftment of the common people. He also provided different rights to the people which was not given to the common people before, and he also introduced direct democracy बा प्रत्यक्ष गणतंत्र रो प्रतिष्ठा करिबारे तांकर मुख्य भूमिका रहिथिला. he was responsible for the introduction of direct democracy in Greece
किपरि भाबरे लोक मानक द्वारा शासन कार्य प्रतिष्ठा लोक माने किपरि भाबरे गणतंत्र प्रकृत अर्थ से माने बुझी परबा गणतंत्र अर्थ हेउची लोक मानक द्वारा शासन सो दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय पेरिकल्स so he contributed for the establishment of direct democracy in Greece. That was a great contribution of Pericles to the whole world जहा कि सारा विश्व पाई तांकर एक बहुत बड़ अवदान थिला. Then introduction of direct democracy. How direct democracy was established in Greece. ग्रीस रे किपरि भाबरे प्रत्यक्ष गणतंत्र शासन प्रतिष्ठा करा जायथिला से विषय में एबे आलोचना करिबा. एट द टाइम ऑफ पेरिकल्स द पॉपुलेशन ऑफ ग्रीस स्टूड 2,80,000 पीपल 2,80,000 लोक ग्रीस रे बास करुथिले जळे पेरिकल्स शासन करुथिले. आउट ऑफ दैट 1 लाख वेयर स्लेव्स सेथिरु 1 लाख लोक से माने कृतदास दे वर द स्लेव्स एंड दे हैड नो राइट नो वोटिंग राइट दे हैड नो राइट टू स्पीक से मानकर अधिकार नथिला से मानकर कहिबार अधिकार मध्य नथिला दे हैड नो राइट एंड 20,000 वेयर फॉरेनर्स 20,000 थिले कोन विदेशी थिले. देयर वर 20,000 फॉरेनर्स इन ग्रीस जो मानक कि कोनोसी अधिकार प्रदान करथला वोटिंग सिस्टम रे से मानकर अधिकार नथिला. दे हैड नो राइट टू पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो प्रशासनिक व्यवस्था थिला से प्रशासनिक व्यवस्था रे से माने अंश ग्रहण करि परिबे एपरि व्यवस्था नथिला बिकॉज द स्लेव्स एंड फॉरेनर्स दे वर नॉट अलाउड टू कास्ट देयर वोट और टू पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस. सो दे हैड नो पॉलिटिकल राइट्स से मानक राजनीतिक अधिकार मध्य नथिला. आउट ऑफ 1,60,000 people only 50,000 were adult males से 1 लाख बाकी जो 1,60,000 लोक रहिले से मानक मध्यरु 50,000 थिले adult males because women had no right to vote, they had no right to participate in the administration. So only male persons were allowed to participate in the administrative process. So there are only 50,000 male persons, adult male persons who were taking part or who are taking active part in politics. So women did not enjoy the political rights. Out of these 50,000 males, only a very few were participating in the political process. एही 50,000 लोक मानक मध्यरु बा मेल पर्सन्स एडल्ट पर्सन मानक मध्यरु बहुत कम लोक प्रशासनिक व्यवस्था रे पार्टिसिपेट कर. as most of the people they engaged in other jobs like agriculture, trade and commerce activities, and they were following different jobs for earning their livelihood. Then in reality Athens was ruled by some influential people who made direct democracy a successful one. ताले बहुत कम लोकंक द्वारा एथेंस रे शासन कार्य करा जाउथिला जो माने कि प्रभावशाली व्यक्ति थे. दे वर द इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स हु पार्टिसिपेटेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड दैट वाज आल्सो वेरी सक्सेसफुल एवं ता सफल मध्य होइथिला. जदिओ पेरिकल्स प्रशासनिक क्षेत्र रे बा शासन क्षेत्र विभिन्न परिवर्तन आनिथिले. ही ब्रॉट ड्रास्टिक चेंज इन द सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स. ही इंट्रोड्यूस सेवरल रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेशन सेथिर मध्य बहुत संस्कार आनिथिले. बट ही हैड नॉट गिवन द राइट टू द वुमेन सेक्शन टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स एंड इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. किंतु से नारी माननकु कोनोसी वोटिंग राइट देइ नथिले कि तांको प्रशासन रे अंशग्रहण करिवार कोनोसी सुजोग से देइ नथिले. So Periclean system of direct democracy rested on 3 important organs. ताले पेरिकल्स कर जो प्रत्यक्ष गणतंत्र ता किपरि थिला जदिओ से नारी मान को विभिन्न अधिकार सते तांको समालोचना मध्य करा जेथे. बट ही हैड ब्रॉट सेवरल चेंजेस. ही हैड गिवन द अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू स्पीक. they can talk about their problems. They had the right to speak
and they had the right to vote, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ vote କରିପାରିବେ। ଗ୍ରୀସ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରାସିଜମ ସିଷ୍ଟମ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା କି ସେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବା ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେହି ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ 6000 ଭୋଟ କଲେକ୍ସନ ହେଇଯାଉଥିଲା ଥ୍ରୁ ଦ ସେଲ୍ ବା ଯେଉଁ ସାମୁକା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ କାଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଥିରେ ଯଦି 6000 ଭୋଟ କଲେକ୍ସନ କରାଯାଉଥିଲା ତାହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗ୍ରୀସ୍ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ୱିଦିନ୍ 10 days 10 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଯେମିତି ଗ୍ରୀସ୍ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ୱାଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି accepted during that period, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିଦେଉଥିଲେ। So Periclean system of direct democracy rested on 3 important organs, ତିନିଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। One was ecclesia and council of 500, then Helia, then council of strategos. These are the 3 important organs of direct democracy. प्रत्यक्ष गणतंत्रर ତିନିଟି मुख्य अंग रहिथिला। तो first of all discuss about the council of strategos, ecclesia। प्रथमे हमें ecclesia विषय आलोचना। The legislative structure of the government consisted of ecclesia and or council of 500 that used to sit 10 times a year। गोटे वर्ष रे 10 थर तार अधिवेशन होई थाए in open air। Internal and external policies were discussed of the government were the main points of discussion। Then Pericles made the post of Archon open to all the citizens enjoyed the freedom of speech and voting right। The legislative structure जोटा गठन करा गला सेथिरे भोट दानर अधिकार प्रदान करा गला। Pericles made the post of Archon open to all। Then जोटा कि पूर्वरु आर्कन पदवी समस्त को दिया जाउन थिला, वर्तमान ताहा समस्त पई बा समस्ते सेथि पई आर्कन पदवी पई योग्य। All the citizens enjoyed the freedom of speech and voting right। समस्त मध्य भोट दान करि परिबे। Then the executive power of the government was vested upon the council of 10 members। The executive power of the government was now rested in the hands of the 10 members who were known as strategos। Pericles was himself a strategos। से निजे जने strategos थिले। These members were elected and the council regulated foreign policy and defense। एही विभाग बा strategos एमानंको द्वारा वैदेशिक नीति एवं बा वैदेशिक पॉलिसी एवं डिफेंस that was controlled, that was regulated by the strategos। So the system of payment was introduced by Pericles for all government officials, so that every citizen they became very loyal to the government and they showed their responsibility। सेमानकर दायित्व बोध सेमानकर कर्तव्य बोध से सब विषय सचेतन आपे आपे सेमान सचेतन होई गेले। दे showed their response where their loyalty was also shown to the state। The judicial administration rested on Helia। बा विचार विभाग मध्य सेथिरे मध्य किसी संस्कार से आनिथिले। There were a number of popular courts presided by justices, juries and committees under the supervision of Helia। So judges were elected by ecclesia and used to give judgments listening to both the affected parties। ताले प्रथमे ग्रीक रे नारी माननको कोनोसी प्रकार सुविधा सुजोग प्रदान करा जाय नथिला। वोटिंग राइट हो कि पॉलिटिक्स रे अंशग्रहण करबा से सब किछि सुविधा सुजोग दिया जाय नथिला। परवर्ती समय रे पेरिकल्स का जुग समय रे जते बेले शासन क्षेत्र में बहुत परिवर्तन आसिला, संस्कार आसिला, सेते बेले किछि लोक माने उपकृत हले जो माने कि साधारण वर्ग लोक थिले। दे कैन ट्राई फॉर द पोस्ट ऑफ आर्कन। आर्कन पदवी पय मध्य योग्य विवेचित होई पारले एवं शासन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार परिवर्तन परिलक्षित होला बा प्रत्येक गणतंत्र सफल होइथिला पेरिकल्स का जुगरे। इट वाज एन आइडियल मिक्सचर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। कर्तव्य एवं अधिकार रो एक मिश्रण हेथिला प्रत्यक्ष गणतंत्र पेरिकल्स का जुगर। देन डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रॉम्प्टेड द एथेनियंस फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन दैट फाउंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस, हिस्ट्री, म्यूजिक एक्सेट्रा। प्रत्येक क्षेत्र रे सेमानकर
पारदर्शिता से प्रदर्शन करथिले ड्यू टू द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. Then we'll discuss about the contributions of the Greece civilization to the world. सारा विश्व को ग्रीस रो कौन अवदान थिला पेरिकल्स का जुगरे बा पेरिकल्स को जुग को कहीं आम सुवर्ण जुग कहते जेहेतु कला साहित्य प्रति क्षेत्र से उत्कर्षता प्रतिपादन से पारदर्शिता देखाई से सुवर्ण जुग कह जाए. ताले प्रथम आम देखा कला एवं स्थापत्य हाउ art and architecture developed during the period of the ruling period of Pericles. So, the Persians caused enormous damage to the city of Athens. जितेबले ग्रीक एवं पर्सिया मध्य युद्ध संघटित होता सेतेबले पर्सियार सैनिक माने द पर्सिया had destroyed the city. पर्सिया तार से नगर राज्य को एथेन्स नगर राज्य को बहुबार आक्रमण करी ताको नष्ट करथिला. बहुत सुंदर सुंदर मंदिर सब मध्य से नष्ट करथिले. से नगर को ध्वंस विभिन्न स्थान रे आक्रमण करी से नष्ट कर देइथिले. सो जेते बेले पेरिकल्स शासन को आसिले से प्रथम पदक्षेप थिला किपरि भाबरे शहर को सुंदर करिबा किपरि भाबरे से पुनर्वार्ता को कंस्ट्रक्ट करबे हाउ टू रिकंस्ट्रक्ट द सिटी स्टेट ऑफ एथेंस टू ब्यूटिफाई इट. He also built the temples and also he also reconstructed the city state of Athens. Athens नगरी को से पुनः निर्माण कराइथिले तार सौंदर्यकरण कराइथिले एवं विभिन्न मंदिर जहाँ सब ध्वंस कर देथिले पर्सियार लोक पर्सिया आर्मी ताकू मध्य से कंस्ट्रक्ट करथिले. तो प्रथमे से एथेन्स नगर रा चारिपटरे वॉल सुरक्षा प्राचीर निर्माण करते जहाँ फल कि फॉरेनर्स माने पुनर्बार आस आक्रमण करें ना. सो द पार्थेनन टेम्पल सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द एक्रोपोलिस माउंटेन वाज बिल्ट बाय द आर्किटेक्ट इक्टिनस. इन दिस टेम्पल was installed a great idol of goddess Athena. This image was built by Greek sculptor Phidias. ग्रीक रो स्थपति थिले फिडियस. तांको द्वारा एही मूर्ति निर्माण करा जाइथिला जो मूर्ति की बहुत उच्च थिला. दैट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइडल ऑफ द ग्रीक. दैट वाज द गॉडेस आइडल ऑफ गॉडेस एथेना बा एथेना देवींकर जो मूर्ति रहिथिला ताहाकू फिडियस निर्माण कराइथिले. सेही मूर्ति तांकर स्थापत्यर बा कला नैपुण्यतार निदर्शन ग्रीक कलाकार मानकर ग्रीक स्थपति मानकर. सो इन दिस टेम्पल वाज इंस्टॉल्ड ए ग्रेट आइडल ऑफ गॉडेस एथेना. दिस इमेज वाज बिल्ट बाय ग्रीक स्कल्प्टर फिडियस. द हाइट ऑफ दिस स्कल्पचर वाज 40 फीट. तो यही मूर्तिर उच्चता थिला 40 फुट. 40 फीट हाइट रो एथेनांकर मूर्ति ग्रीक कला तार स्थापत्यर निदर्शन थिला जहा कि सारा वर्ल्ड पाई इट्स वन ऑफ द बेस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड आल्सो दैट सो दे आर एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर. सो इट वाज बिल्ट ऑफ वुड. ताहा काठरे निर्माण करा जायथिला. से जो मूर्तिटी काठरे निर्मित दैट वाज बिल्ट ऑफ वुड. द इमेज वाज adorned with ivory and gold. Ictinus and his disciples beautified the temple with paintings and miniature sculptures. से माने सही मंदिर को सुंदर सुंदर चित्र रे से माने ताको तार सौंदर्यकरण करथिले. दे ब्यूटिफाइड दैट टेम्पल विथ पेंटिंग्स एंड मिनिएचर स्कल्पचर. छोट छोट स्थापत्य कला सेथिरे से माने से मंदिर को सजाइथिले. सो द इमेज ऑफ गॉडेस एथेना was adorned with different weapons. से जो एथेना देवींकर मूर्ति विभिन्न weapon बा अस्त्र शस्त्र द्वारा सज्जित होइथिला. गॉडेस एथेना the image of goddess Athena was adorned with different weapons. The Parthenon temple was built of white marble. धला मार्बल रे से पार्थेनन मंदिर निर्माण करा जाइथिला. Besides Parthenon on the western side of the Acropolis mountain there was the temple of a victory and on the other side was constructed a great image of
goddess Athena. The whole of the Acropolis mountain was transformed into a great center of Greek art and architecture. So, Phidias was a great sculptor at that time. ସେହି ସମୟରେ ଫିଡ଼ିଆସ୍ ଜଣେ ମହାନ ସ୍ଥପତି ଥିଲେ. ହି ୱାଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ସ୍କଲ୍ପଟର. ତାହେଲେ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, କଳା, ଦେନ୍ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସିଲେନ୍ସି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ. ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ଶୋଡ୍ ଦେୟାର ଏକ୍ସିଲେନ୍ସି ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ temple building, in the field of making images or idols, and they had constructed different types of gods and goddesses, the images, so that their excellence in the field of art and architecture is also a great contribution to the world. Phidias is credited with the making of the huge image of Zeus installed at Olympia, was another great creation of Phidias. He also shaped the images of Paeonius and Mairon. The Greeks constructed open theatres. The greatest painter of the Periclean age was Polygnotus. Examples of Greek temple architectures are Temple of Zeus, Temple of Artemis at Ephesus. So, there are so many temples built in Greek. Greek रे बहुत गुड़े मंदिर निर्माण करा जाइथिला, किंतु जो कि ग्रीक कला स्थापत्यर उत्कर्षता प्रतिपादित होइथिला, जो तांकर एक्सीलेंसी देखा जाइथिला, से सब हिला टेम्पल ऑफ जियस, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, इफेसस रे थिबा टेम्पल ऑफ आर्टेमिस. सो देयर आर सो मेनी टेम्पल्स. they have also showed their excellence in the field of painting. ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରକଳାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇଥିଲେ. ଗ୍ରୀକ୍ ଲୋକମାନେ कला स्थापत्य भास्कर्य क्षेत्र में तांकर कला नैपुण्यता प्रदर्शन करथिले. So, let us discuss about the literature. The brilliant writers of Greek period were Aeschylus, Sophocles and Euripides. Aeschylus, Sophocles, Euripides एमाने साहित्य कृति क्षेत्र में तांकर उत्कर्षता प्रतिपादित करथिले. किपरि सेही समय बहुत गुडे नाटक रचना करा जाउथला. देयर आर सो मेनी ड्रामास एंड प्लेज वे आर रिटन बाय डिफरेंट ऑथर्स, एंड दोज ड्रामास और दोज प्लेज दैट वेर प्लेड इन द ओपन थिएटर्स. सेटा ग्रीक रे मध्य ग्रीस रे ओपन थिएटर सब रहिथिला, जहा सब जो थे कि से लेखक मानकर नाटक सब प्रदर्शित होउथिला एवं ताहा अत्यंत चित्ताकर्षक थिला. से नाटक गुड़िक बहुत that showed their excellence in the field of writing. Aeschylus Aeschylus written the Persian, the Marathon, the Prometheus Bound. These are the important writings of Aeschylus. Then Sophocles, he had written Sophocles had written Electra, Oedipus Rex, Antigona. So, these are the important creations of Sophocles. Then Euripides had written Trojan Women, Medea and Phaedra. So, these are the writings of the Greek writers. They have showed their excellency in describing the social economic condition of the period of age of Pericles, and also the history of Greek civilization. They had showed different facets of their culture. Then in the field of history, the tremendous achievements are done by Herodotus, Thucydides, Xenophon. तो ऐतिहासिक हेरोडोटस को इतिहास जनक कहा जाए. They had Herodotus, he had narrated about the history. Then Thucydides, then Xenophon, they have also contributed a lot in the field of history. Then education and learning was also very important during that period. The physical education was also given to the peoples. Gymnasium and stadium were created. Then Plato's monumental work were the Law, the Republic, the Apology, the Statesman. In the field of philosophy, Socrates, Plato and Aristotle, they played a vital role.
they had created new, they had introduced new ideas, new ideologies, and they made the people to think about it. Then in the field of astronomy, Anaximander, Heraclitus, Democritus, they had contributed a lot. Then Hippocrates is also considered the father of medicine. In the field of science, there is also tremendous developments seen in the Greek history. So, thank you for attending this class. Thank you all.